Hi guys, welcome back to our channel. We are going to start a new series of general knowledge for the upcoming mostly Gujarat Civil Judge exam. In this series, what we're going to do, we're going to post one video at a time of the most important questions that might form a part of your upcoming exam. So stay tuned. Also try to attend all the classes. एक एक करके in every series, in every part we're going to add some more questions. Suppose in one part we add 50 questions, in another part 50, and then so on and so forth. We're only going to include the most important questions and not some random questions, the most important questions. Once you study these questions, once you watch this video once, I would really suggest you to watch one video at least 3 to 4 times. Watch one video, every part, watch every video at least 3 to 4 times, so that even if you don't make your notes from this video, what will happen that once you watch one video at least 3 to 4 times, आपके दिमाग के अंदर आंसर ऑटोमेटिकली बस जाएगा. एक बार वो आंसर बस गया, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. विदाउट फर्दर अडू, let me just start with the classes. Okay. All right. The first question. The Shanghai Cooperation Organization, SCO, is an intergovernmental mutual security organization which was founded in 2001 by the leaders of which country? So these are the options. I'm just repeating the question again. इसमें हमारे 2-3 चीजें और आंसर्स और आ रहे हैं कि जो SCO है आपका वो क्या है. पहली चीज तो वो एक इंटर गवर्नमेंटल म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. दूसरी चीज कि 2001 में इट वाज फाउंडेड इन 2001. नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन सी कंट्री के लीडर्स हैं. ठीक है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ऑल राइट, मूविंग ऑन. वेरिएबल रिजर्व रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर Variable reserve rates and open market operations are the answer is B, monetary policy. Question number 3. Where is the World Health Organization Global Center for Traditional Medicine established in India? Where is the WHO's Global Center for Traditional Medicine established in India? The answer is C, Jamnagar. अगर आप लोग ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं तो 1.25 की स्पीड पे देखना तो एकदम सही रहेगा. मैं उतनी ही देर पॉज कर रही हूँ. अगर आप लोगों को डायरेक्टली आंसर चाहिए तो 1.25 की स्पीड पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में क्या एस्टैब्लिश किया है. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया है. कहाँ एस्टैब्लिश किया है? तो जामनगर में एस्टैब्लिश किया. ठीक है. अगला क्वेश्चन. Raja Todarmal introduced standard weights and measures, a land survey and settlement system, revenue districts and offices during Akbar's reign. So Raja Todarmal served which other ruler? The answer is Sher Shah Suri. अब देखो ये सारी चीजें रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. रेलिवेंट क्या है कि भाई राजा टोडरमल ने कब सर्व किया था अकबर की रेन में, और दूसरा कौन से रूलर की रेन में सर्व किया था? तो शेरशाह सूरी. ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती. ठीक है. नेक्स्ट. Gypsum, chalk and limestone are the examples of which kind of rock? Gypsum, chalk and limestone are examples of sedimentary rocks. Sedimentary rocks. Next. Which of the following lake is shared by 2 states of India? इनमें से कौन सी लेक इंडिया के 2 स्टेट्स शेयर करते हैं? The answer is पुलिकट लेक. ठीक है. नेक्स्ट. Spacecraft Aditya L1 for studying the solar atmosphere, which is recently launched by ISRO, is positioned at the point between the Earth and the Sun, is known as A, Lagrange point. ठीक है. Next. Stockholm Conference on Human Environment was held in which year? The answer is B, 1972. Next. The author of the book Raj Tirangani. Who is the author of the book Raj Tirangani? The answer is B, Kalhana. Kalhana. Next. The first successful nuclear bomb test in Pokhran test range is known as the first successful nuclear bomb test.
It is known as Operation Smiling Buddha. Operation Smiling Buddha. Next, the hero of the Malavi, I can't pronounce this, I'm sorry, please read this, of Kalidas is associated with which of the following dynasties? The hero of Kalidas is associated with which of the following dynasties? The answer is the Sunga dynasty. The Sunga dynasty. Next, who is the chairman of the committee set up to assess the viability of one nation, one election concept? कौन है chairman committee का? The answer is C. Ramnath Kovind. Shri Ramnath Kovind is the chairman of the committee to assess the viability of one nation, one election concept. कि क्या बन सकता है, कर सकते हैं हम ये concept लागू, या कोई परेशानी आ जाएगी? Next, winner of Chess World Cup 2023 Magnus Carlsen belongs to which country? तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी है कि चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? इन्होंने जीता. ठीक है, अब दूसरा सवाल, ये कौन सी कंट्री से है? तो ये नॉर्वे से है. कहां से है? नॉर्वे से है. नेक्स्ट, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज हेल्ड इन 1885? तो देखो, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हेन वाज इट हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन 1885. ये क्वेश्चन 1 हो गया. अब कहा कौन प्रेसिडेंट थे? तो द आंसर इज सी, WC बैनर्जी, ये प्रेसिडेंट. ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना that where was the first session of the Indian National Congress held? Where was the first session held? कहाँ पे? Please. Okay, this is a question for you guys. Next, Quit India movement was launched. Quit India movement was launched in response to the Cripps mission. In response to the Cripps proposal. Next, which is the first state in independent India formed on linguistic basis? लैंग्वेज के बेसिस पर वो पहला देश जो स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉर्म हुआ था, उसका नाम क्या है? द स्टेट वाज आंध्र प्रदेश. द स्टेट इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया. नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर इंडियाज चंद्रयान 3 लैंडेड ऑफ मून्स साउथ पोल. इंडियाज चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ था? मून के साउथ पोल पे. तो जिस पॉइंट पे लैंड हुआ था, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट. उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट. नेक्स्ट, इन द ईयर 2019 द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर बाइफरकेटेड इनटू. जो आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वो किन दो पार्ट्स में बटा है? सो द आंसर इज डी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. दोनों ही यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं. नेक्स्ट, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान dealt with the guidelines related to, ये तो अब सबको याद ही हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस. ईयर याद रखिएगा प्लीज, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1997. ठीक है. द लार्जेस्ट bench of the Supreme Court was constituted in Keshav Nanda Bharati versus State of Kerala 1973. How many judges constituted the bench? तो कितने जजेस थे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में? 13 जजेस बेंच. आज तक की लार्जेस्ट बेंच रही है. ठीक है, अगला, which is the largest high court of the country in terms of sanctioned strength of judges? सबसे ज्यादा जजेस की स्ट्रेंथ सैंक्शन कौन से हाई कोर्ट में है? द आंसर इज इलाहाबाद हाई कोर्ट. अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. कितने जजेस सैंक्शन है? नेक्स्ट, द रीसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कंसर्न्ड. सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में जो अभी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इट इज कंसर्न्ड विद सेम सेक्स मैरिज. सेम सेक्स मैरिज. नेक्स्ट, who was the first chief justice of the Supreme Court of India? कौन थे पहले चीफ जस्टिस? जस्टिस H.J. कानिया. Justice H.J. Kania was the first chief justice of Supreme Court. Next, the bill which was introduced by the government in Parliament seeking to replace the Evidence Act but now stands withdrawn recently is called भारतीय साक्ष्य बिल. बट अब क्या हो गया है?
अब ये हो गया है, एक्ट बन गया है, ठीक है, और नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, BSA. Indian Evidence Act is now BSA. Okay. Next, the recently enacted 106th Amendment, 106th Amendment to the Constitution provides for one-third seats in various legislatures to be reserved for women. Which of the following legislative bodies is not included within the scope? जो 106th अमेंडमेंट आपका नया नया आया है वो बोलता है कि भाई 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व कर दो, ठीक है, अलग अलग लेजिस्लेचर्स में। तो ऐसा कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें 1/3 सीट रिजर्व नहीं होंगी विमेन के लिए? कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है? द आंसर इज राज्यसभा। राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा। नेक्स्ट, according to 2011 census, which of the following is least populous state of India? 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? द आंसर इज बी, सिक्किम। सिक्किम is the least populous state of India. Next, under the GST taxation framework, CGST means, CGST का क्या मतलब है? The answer is B, Central Goods and Service Tax. Central Goods and Service Tax, Central. Next, which of the following is a national monument of India? इन चारों में से इंडिया में नेशनल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट कौन सा है? The answer is B, India Gate. India Gate. Next, which one of the following Indian cities is known by the nickname of Deccan Queen? Deccan Queen, कौन सी इंडियन सिटी, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी का निकनेम है? The answer is B, पुणे। पुणे का निकनेम है डेक्कन क्वीन। Next, who among the following is the first woman chief minister of post-independent India? Post-independent India, इंडिपेंडेंस के बाद पहली वुमन चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन थी? The answer is C, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी, she was the first woman chief minister of post-independent India और independent India, ठीक है। Next, who among the following is the first chief election commissioner of India? First chief election commissioner of India कौन है? The answer is B, Sukumar Sen. Sukumar Sen was the first chief election commissioner of India. Sukumar Sen was the first chief election commissioner of India. Next, which of the following is or are the official language of the International Court of Justice at Hague? International Court of Justice जो है, जो कि कहाँ पर है? हेग में, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? The answer is D, English and French, दोनों ही। This means what? This means English and French are the official languages. English and French are the official languages of the ICJ. And where is ICJ? The headquarters, it is at Hague. Next, International Yoga Day. International Yoga Day कब celebrate होता है? 21st जून को। 21st जून को। अगला, who has authored the book Public Service Ethics? Public Service Ethics जो किताब है, किसने लिखी है? The answer is C, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। Next, Ketanji Brown Jackson became the first black woman judge of which country? First black woman judge of which country? The answer is A, US Supreme Court. US Supreme Court. Brown Jackson, she became the first black woman judge of US Supreme Court. ठीक है? Next, faster, which means fast and secured transmission of electronic records. Fast and secured transmission of electronic records, जिसका acronym है faster. It was launched by Justice N.V. Ramanna. So Justice N.V. Ramanna recently launched faster, which is what? Which is fast and secure transmission of electronic records. Next, Manila Declaration. Manila Declaration is related to
Manila Declaration is related to marine coast protection. See, marine coast protection. So, Manila Declaration is related to marine coast protection. Next, the Nehru-Liaquat Pact between India and Pakistan, which was signed in 1950 to resolve the issue of. So, Nehru-Liaquat Pact, it was signed between India and Pakistan and signed when? In 1950 to resolve the issue of the protection of minorities. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1950 में एक नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ था. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल 54 मेंबर्स. टोटल 54 मेंबर्स हैं यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नेक्स्ट, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंट प्रेसिडेंट कौन है? बी, जॉन ई डोनोग. डोनोग वर्सेस स्टीफेंसन याद करते ना, तो वही नहीं, मतलब वही नहीं, वहां से नाम याद कर लेना. वो क्या है? वो प्रेसिडेंट है फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, आईसीजे. नेक्स्ट, which article of the UN Charter relates to composition of Security Council? Security Council के composition से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है UN Charter का? आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 relates to the composition of the Security Council. आर्टिकल 23 किसका? UN Charter का. Next, who was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India के constitutional advisor का नाम क्या है? A, B.N. Rao. B.N. Rao कौन थे? B.N. Rao. B.N. Rao was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India. Next, who was the second chairperson of the National Human Rights Commission of India? Second chairperson देखो यहाँ पर क्या है आंसर? बी, जस्टिस M.N. Venkatesharya. Justice M.N. Venkatesharya was the second chairperson of the National Human Rights Commission of India. Next, Sarthi mobile app is related to Stock Exchange Board of India. Sarthi mobile app is related to Stock Exchange Board of India. Next, which of the following article of the United Nations Charter relates to domestic jurisdiction? UN Charter का कौन सा आर्टिकल डोमेस्टिक jurisdiction से रिलेट करता है? The answer is A, Article 2 Clause 7. Article 2 Clause 7 डोमेस्टिक jurisdiction से रिलेट करता है. Next, author of this book. Who is the author of this book? The answer is C, Grotius. De jure belli el pacis. Grotius. The first Indian judge of International Court of Justice was? Who was the first Indian judge of the International Court of Justice? The answer is B, Sir B.N. Rao. Sir B.N. Rao was the first Indian judge of International Court of Justice. Sir B.N. Rao was the first Indian judge of International Court of Justice. Next, at present, who is the Secretary General of the United Nations? United Nations के Secretary General का नाम क्या है? Antonio Guterres. ये बहुत important question हो जाता है. अगला, parliamentary committee means a committee which is all of these: appointed by the house, elected by the house, or nominated by the speaker. अगर कोई भी committee is appointed by the house, then it is a parliamentary committee. Or if a committee is elected by the house, then it is a parliamentary committee. Or even if the committee is nominated by the speaker, then it is parliamentary committee. So all of these. Last, who is the present Comptroller and Auditor General of India? अभी फिलहाल इंडिया के Comptroller and Auditor General का नाम क्या है? नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू. गिरीश चंद्र मुर्मू is the present Comptroller and Auditor General of India. So देखिए, आज के लिए 50 questions. This is part 1. In the next part, we'll do 50 more questions, and then if I find other questions important, then that.
We're only going to deal with the important questions and not some random questions just to increase your unnecessary burden. All right. However, I would still advise you to watch one video at least 3 to 4 times. Why? So that it gets fixed into your brain. Okay? Once it gets fixed into your brain, then automatically it just has to you just need to know this in your subconscious, and that's it. Once you see the question, automatically your mind is going to tick the correct option. ठीक है जी? चलिए, that's it for today's class. I will see you tomorrow. Take care. Bye bye.